to Thank you. you. Thank you, mate. Happy birthday. Thank you. Thank you, Amma. Thank you. Happy birthday, dear. Why isn't anybody singing? That's it. Thank you. Okay. Birthday to you. Thank you. Okay. यमला पगला दीवाना हो रब्बा किसी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है साडे उत्ते ओ मरदी है के ओ मैनू प्यार करती है साडे उत्ते वो मरदी है मैं जट यमला पगला दीवाना बेटे तेरे 50वें जन्मदिन उत्ते बहुत बहुत मुबारक बहुत बड़ा माइलस्टोन है यार खुश रवें तू साढ़े वास्ते तो अज भी यार मैं जल्द देखदा ना मैनू तो यही लगता है वो छोटा जिहा शैल है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਔਰ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਲੇਗਾ ਇਹ ਉਹ ਮੀਨਸ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਤੀਜਾ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ਿਫਾਲੀ ਮਿਲੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਕਰੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ जगह ते पहुँचे और तेरे अपने जो काम कर रहे हैं तू इस तेन परमात्मा और कामयाबी बख्शे बहुत बहुत बेटे करी फिर मुबारक और आने वाले जी तेरी बाकी एज है वो परमात्मा तेन होर ज़्यादा खुशियाँ देवे और 100 साल तक कम से कम तू भाई इंजॉय करें अपनी ज़िंदगी और कामयाब रहें 13 जून 1976 1:50 PM पे हमारा राज दुलारा हमारे घर आया जिसके आने के साथ ही हमारे घर में इतनी खुशियाँ परमात्मा ने दी कि मैं बता नहीं सकती तो हमारी तो खुशी का कोई अंत ही नहीं था आवाज़ें बदल बदल के रिश्तेदारों को फ़ोन कर देता था कभी मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ कभी मैं कोई बोल रहा हूँ तो उसको ये वो रिश्तेदार पहचानते नहीं थे इसकी आवाज़ को ना तो एक दिन इसने अपने पापा को भी फ़ोन ऐसे ही कर दिया मुझे तो बहुत बार किया था फिर बाद में बता देता था तो फिर पापा को फ़ोन किया कि बताया नहीं मैं कौन बोल रहा हूँ तो कहता कौन बोल रहा है प्रवीण कुमार कहते हाँ मैं प्रवीण कुमार बोल रहा हूँ अच्छा मैं ना राम प्रकाश बारी बोल रहा हूँ पीरपुर साहब से और मैं इतने बजे नंगल डैम पहुँच जाऊँगा मुझे आकर ले जाना तो ये तो एकदम बारी साहब कहते पैरी पड़ने चाचा जी तो कहना खुश रहो उसके बाद फिर ये अच्छा फिर थोड़ी देर बाद ना फिर फ़ोन बंद कर दिया फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कहता पापा आपने मेरी आवाज़ नहीं पहचानी तो फिर पता चला कि ये विशाल बोल रहा था तो ऐसे ये नोटी बन जाता था वो इसका 50th बर्थडे आ रहा है उसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैप्पी बर्थडे एंड विशिंग यू हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ चलो बेटा मैं तेरी बहुत याद आती है वो तो बहुत प्यार करता है मैं भी तेन बहुत प्यार करती जलंधर नंगल जाना तो मैं भाभी को कहना नाल ही भेज दो मेरे जलंधर लैना फिर जो पापा ने लैन आना फिर मैं रोना भी दिल नहीं लगना फिर मम्मी ने कहना भी की कहते ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗਣਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ हैप्पी बर्थडे शैले विशाल बारी जी 50वें साल के जन्मदिन ते बहुत बहुत मुबारक ਤੁਹਾਨੂੰ याद होगा 91 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਗਲ ਆਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੱਸੀ ਨੂੰ ਗੋਗੀ ਮੱਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਯੂਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯੂਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਘੁੰਮੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਦੁਬਈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੁਮਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲਾ, ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ 50ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸ਼ੈਲੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਨਟਖਟ ਸ਼ੈਲਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ। ਤੇ ਕਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨੰਗਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਕਰੀਦੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਨਟਖਟ ਸ਼ੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਸ਼ੈਲਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭਗੌੜ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਦੀਆਂ, 50ਵਾਂ ਬਰਥਡੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇ। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੰਮਾ ਹੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਟੋਕਰੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈਗਸ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰ ਛੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਟੋਪੀ ਜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਨਾਲ, ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈ ਹੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ 4 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਲੱਗ ਗਈ ਨੰਗਲ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹੇ, ਇਕੱਠੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਗੈਰਾ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ, ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਤੇ ਆਫਿਸਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ, ਹਰ ਵਕਤ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਫੇਸ, ਹੰਬਲਨੈਸ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ੈਲੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। ਬੇਟਾ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਯਾਦ ਕਰਾਈਏ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਾਹੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਨੰਦ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਾਹੁਲ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 3-4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਚਾਚੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸ਼ੈਲੇ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਇੰਜੋਏ करो 50th बर्थडे, और परमात्मा लंबी उम्र देवे और सेहत बख्शे। ठीक है, ओके बेटे, बाय, ऑल द बेस्ट। हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी 50th बर्थडे। मे गॉड ब्लेस यू। आई हैव learnt a lot from you भैया। Thank you for being a strong pillar and guide in my life, and yeah, you are very good in hospitality, in showing care, and I might not have been able to say it every time, but I felt the care every time we visit you guys, or you visit here as well. Thank you so much for being such a great brother भैया। May God bless you. Stay happy and healthy always. I'd like to give a special shout out to my mummu. He's very special to me.
I can't keep count of the number of days out we've had together, like Alton Towers or Thorpe Park or many different water parks. But that's not the reason I love him. He's so funny and he cares about me. And even though I've caused him some serious upheavals, such as scratching his arm so hard it left a scar, he still sticks with me. You're the best mum I could possibly ever ask for, and we've really had fun together. So for all the fun times we had, it's thanks to you. So I'm really grateful for all the nice times I had with you, Mamu. And also I really like your humour. Like, I really love your sense of humour, which makes everyone happy around you, especially me, because I really like people with good sense of humour, and I really love your great sense of humour, Vishal Mamu. And I've got funny memories, like, you know, when I was younger, your angry face, that made me laugh. And that's very funny, it's super funny when you make your angry face. Like, I really like that. That's one of my favourite memories with you. And thanks for taking us to this water park, which was so thoughtful of you. So for all the things you've done, I'm really grateful for. And not just for taking us out, but for also being humorous, for also giving wise talks when I needed. And you've been there for me, and you'll still be there for me no matter what. I'll always love you, Vishal Mamu. I hope you have a lovely 50th birthday and enjoy the rest of your life. Love you. I'll always be there for you. Hello, Bhaiya. Wishing you a happy birthday. Happy 50th birthday, Bhaiya. So, I think growing up with you was a combination of comedy, psychological warfare, and survival training. I remember for years you convinced me that how I wasn't actually a part of the family, and I was brought in from a Gurudwara, Pabor Sahib, where there are lots of monkeys, and that before bringing home my tail was cut off. And every time you would tell the story, you would point to my lower back. That's where the scar is. And you were so committed to the story that at one point you did actually convince me, and I actually checked for the scar on my lower back. But I mean, that's the level of confidence this man has in spreading misinformation long ago, before there was any social media. So that's that. And then there was another time when mom was away for studies, and dad used to be away during the week for work. And somehow my elder siblings, including him, found this movie, Samri, a Bollywood horror movie. I don't know how much horror it had, but at that time it seemed really terrifying. So I was young, so obviously I was very scared and terrified. And you would think a loving elder brother would comfort me and, love me for like, it's okay, comfort me. But not this guy. He actually used to make me go in the backyard at midnight to pick radishes. That's weird. I don't know why you did that. But yeah, he used to do that, and sometimes he will stand at the door holding a candle, like he personally auditioned for that horror movie. Like, so I used to be so scared that I would start picking radishes before the sunset. But that didn't budge this guy. There was always one more radish needed from the darkest corner of the backyard. So, well, thank you, brother. Without you, I would not have learned resilience, skepticism, and the facts about the fact questioning about the monkey tails, and the midnight agriculture mission survival. Yeah, I wouldn't have done that without you. So thank you, and wish you a very happy birthday once again. And for the record, I still haven't found that scar. हैप्पी बर्थडे टू यू भैया, हैप्पी 50th बर्थडे टू यू। और मेरे साथ आपकी जो मेमोरीज़ हैं वो आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेमोरीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम नंगल आते थे हर छुट्टियों में, मैं, मम्मी और राहुल भाई। सो वी यूज़ टू लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू स्पेशली। मुझे याद है कि हम इतनी मस्ती करते थे, क्रिकेट खेलते थे, स्विमिंग पूल जाते थे NFL क्लब में, और उसी मस्ती के चक्कर में हमारे पास दिन कम पड़ रहे थे तो हमने आपके घर पे जो मेन क्लॉक होती थी उसको पीछे कर दिया था। तो हम लोग स्टेशन गए, वी वर ऑल लाफिंग एट द बैक ऑफ, मतलब हमें तीनों को पता था कि हम ट्रेन मिस करने वाले हैं, बट मम्मा को नहीं पता था। तो हम उस रेलवे स्टेशन पे जाते हैं नंगल के, एंड वी मिस अवर ट्रेन, एंड वी वर ऑल लाफिंग, मतलब आप, मैं और राहुल भाई। वी केम बैक, मम्मा ने फ़ोन किया पापा को कि वी मिस्ड, बट इट वाज ऑल इंटेंशनल। हमने ही वो घड़ी पीछे की थी ताकि हम और क्रिकेट खेल सकें, स्विमिंग पूल में जा सकें, NFL क्लब में। तो ऐसी मस्ती हम करते होते थे आपके साथ। मुझे अभी तक याद है हम आपके LMS स्कूटर पे घूमते होते थे, एंड यू यूज्ड टू ड्राइव सो फास्ट। आई हैव सच मेमोरीज विद यू,
and I wish you good health, healthy life ahead, wealthy life also, and happy birthday to you once again. Happy birthday, Bhaiya. Wish you a very, very happy 50th birthday. I actually can't think of any single memory because we have so many fond memories of doing things together. But if I have to just look back and think of what you have meant to me all these years, especially when I was growing up, I really looked up to you. And I've told this to you before, but I just want to say it with a lot of gratitude that you really inspired me, and whatever I could see in you in terms of how hardworking you were and how grounded and humble as an individual you were, I tried to learn from those and wanted to be so much like you. I don't know if I'm at all like you or not, but growing up I really, really wanted to be someone like you. We obviously have so many memories of playing together, cricket, badminton, TT, our days at the swimming pool, or off late our days at the pickleball court. I think I've always seen you as somebody who just wants to enjoy that moment. Whenever we are together, we are just having fun. चाहे वो खेलना हो, चाहे वो बातें करना हो, चाहे वो घूमना फिरना हो, ऐसा लगता है आपको देख के you just want people around you to have fun all the time. And somewhere, I just love that when I'm with you. And not just me, but I'm sure, everybody would tend to agree that you are a fun-loving, genuinely happy person who makes everybody around very happy. So I am sure you're making everybody happy again today. Have a great time with all your friends. And yes, to all those friends who are watching this with you, I had so much fun when I met them. They're very much like you, as they say. क्या वो कहावत है कि birds of same feather flock together, right? You found people like yourself. So have an amazing time, and wish you lots of love and happiness as you enter your 50s. Birthday, Bhaiya. Wish you a very happy 50th birthday. Lots of memories, lots of fun times that we've had, and we love and wait for you to visit us. And our visit to Birmingham was amazing, one of our fondest memories. Hope to make many more memories together. Wish you a very happy and blessed life always. Happy birthday. Happy birthday, Chachu. Wishing you a very happy 50th birthday. Hope you have a lot of fun and enjoy. And every time that you come over or we came to London, I enjoy a lot. It's so much fun. You're so fun-loving and you keep joking around with us. So I really like how much time I spend, whatever time I spend with you. Happy birthday. Happy birthday. Vishal, happy birthday to you. Happy birthday to you. विशाल तू सदा खुश रह, हम यही गल अपने परिवार च खुश रह, जिद्दां तू साडे नाल प्यार करदा है, सब नाल ही अस करदा प्यार, तू सब नाल ही करदा है, पर साडे तू बहुत प्यार करदा है। ਅਸੀਂ यही चाਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈਏ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਮਿਲ ਵਰਤ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹੋ। Thank you, Musa, for being so fun, supportive and caring. Stay blessed and keep the amazing person as you are. Jiju, you always make every family gathering more enjoyable. I like the moments that I spent with you. Yay! I truly learn a lot from you, Musa. Yay! Happy birthday! Happy birthday! Wishing you a very happy 50th birthday. You have no idea how much I miss you, how much I look forward to be with you. I still remember my first day in UK, and England would not have been possible of my achievements, studies, research without you. You have always been an inspiration to me. You've taken care of me like a younger brother. I have always looked forward upon you as my elder. Such a great, lovely moments of playing together, drinking together, being together as a family. I miss you so much. I really wish I could have been here with you on this day. You hold a very special place in my life and my heart. And I wish you all the best, all the success in your life. Rise and shine. Keep rocking, keep killing, keep playing, and keep inspiring me. Thank you for everything. And I look forward for more.
as always. Love you so much and happy birthday. This one is for you. Very much inspired by you. Cheers. नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ਹੈਲੋ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਵਿਸ਼ ਯੂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਈਅਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀਰ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੰਗਲ 'ਚ ਖੇਡੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਗਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਹੋਏ ਆਪਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਗੋਨ ਟੂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ PG ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਚੰਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ 50 ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਦ ਗੋਡ ਗ੍ਰੇਸ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜੁਬਲੀ ਅਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵਿਸ਼ ਯੂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ। Hi Vishal, wish you a very very happy 50th birthday. Have a great day, have a fun time, wish you all the good luck, health and happiness for years to come. For me, he has always been Vishal sir, even after 23 years. Since the time I met him, right, my phone still have his number as Vishal sir, now UK, right? So that's how it has been. So I think I have learned a lot from him. Although I started working before that, but I would really say that my whole orbit of my professional graph changed when I started working with him. And as a young guys, right, I used to follow him to the T, right? The way he used to dress, his combination of check shirts and silk ties, I still remember, right? So I always used to follow that dressing sense of his, right? Not only dressing sense, the other things like the way he used to talk, the way he used to bring value on the table. At any discussion, you can discuss anything from him, right? He used to recommend us books, he used to recommend us TV series and everything, right? And that's how we have bonded through the years of our life. I personally believe that not many people in your life leave that kind of impact which he has on me. There have been times when I was down. There have been times, like everybody, there have been times when I was not having clarity in terms of what I want to do, how I should be achieving, and just like a good mentor, like an elder brother, and I would say just like any good friend, right? He has always been there for me, and I really feel blessed that God sent him in my life. And of course, Vishal sir, it's your 50th birthday. May God bless you. I know wherever you are somebody who will always help people, who will always try to bring the best out of them, and I think that's why you have been sent on this planet, right? So keep doing it, and of course I really wish that आप हमेशा हमारे साथ होते यहाँ पे, but that's perfectly fine. Everybody has their own role and purpose in their life. I wish you all the very very best, and having said that, I really wanted my son Kabir
to listen to this whole conversation. You know, so here it is. Happy birthday from us. Happy birthday, Vishal, uncle. And of course, whenever you are back, we will have a grand celebration in India, of course. Thank you very much. Hi, Vishal. 50 years. Wow. Congratulations. By the way, this is Saugat. I hope you can recall. I guess your memory is a bit unreliable these days with the big 5-0. But in all seriousness, I'm so grateful that our days of performance reviews and small talks evolved into a genuine, lasting friendship. Cheers to the half a century of wisdom, grey hairs, and, have a lovely life ahead. Hello, Shah. जन्मदिन दिया बेटा 50 जन्मदिन दिया बहुत बहुत मुबारक हूँ तेनों परमात्मा खुश रहो बच्चे राजी रहन तेरे मिसेज राजी रहे उम्र वाला करे परमात्मा तेनों अपने बच्चों दी खुशियां देखो तंदुरुस्ती देवे सच्चे पातशाह तेरियां कमाइयां च बरकत पावे ते मां नूं ना भुल्ली बड़ा वाली माता ना भुल्ली मां नूं याद रखी अच्छा बहुत बहुत मुबारक बच्चे बहुत बहुत ही बधाइयां तुहानूं बहुत बहुत जन्मदिन दियां ओके बेटा लव यू सन लव यू Hi Vishal and Shifali and kids, a very very happy birthday to you. It's a privilege and an honor to have you in our lives and we love you so very much. We're so proud of you for what you've achieved in a short space of time and you're a credit to your mum and dad who brought you to this world. So namaskar and pranam to them as well. And good luck, God bless, we love you. Hello Vishal. हैप्पी बर्थडे मेरे को कुछ भी वर्ड नहीं है थोड़े जे टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਿਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆ ਔਰ ਮੰਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਪ ਅਸ਼ਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਐਂਡ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ परमात्मा करे साडा इसे तरह प्यार बनिया रहे और खूब सारिया खुशियां बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए तू जिए हजारों साल ये मेरी आरज़ू देखिए हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू happy birthday to Vishal happy birthday to you बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे Hi dear Vishal, wish you many happy returns of the day. Happy 50th birthday. Have a lovely time. Enjoy with friends, family and all your tennis gang. Forever ready. And when you after 50th probably we have to play tennis more. So get fit and enjoy. Anika, say happy birthday. Happy 50th birthday Vishal Jachu. Sing a song. So happy birthday, Kanto. Happy birthday. Happy birthday to you. Good girl. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vishal. Happy birthday to you. Happy 50th, Bari Saab. क्या कहें? 50 years of high energy, ambition, and inspiring everyone. Paji, you've always been a true go-getter. Someone who turns challenges into opportunities, even in cases where it is not required. Whether it's organizing sports day or surviving a bachelor's do in Prague. Bari Saab operates in a simple principle. Why do it in the normal way? Why can't we add a little bit of a twist? A surprise, a story that everyone will remember. बारी साहब विल से यार ऐसा क्यों करें यार हम ऐसा नहीं कर सकते और हम सब बोलेंगे बारी साहब रहने दो यार बट विद इन दैट सवाल एंड जवाब
we would always think, why not? Let's try it out. Bari Saab ki bhi sun lete hain. So, Bari Saab, I wish you all the best. Have a wonderful 50th. And as we celebrate this milestone, may you have years ahead with more opportunities, more adventure, more success, good health. Good health is required. Sports day aise nahi chalega, boss. Okay? And keep chasing your new dreams, new goals, and break the barriers. And show everyone that what's possible and what's not. Okay, bye bye. Take care. Have a great 50th. Happy birthday, Vishal. Chachu. To me, you have always been the liveliest and the funnest Chachu out of them all. Every time I've seen you, you've had the biggest smile on your face and you always bring the best energy. My favourite memory that I have of you since we were young is when we all used to sit in the convertible car that you had and you used to put the roof down and play music very, very loud, and it would always specifically be Desi Boys. For me, Vishal, first of all, you are getting closer to 100 than you are 0. So you're getting old. Just reminding. And for me, first impression of you coming into our life, I can say that very professional, very ethical, and very straightforward. Good, bad, ugly, as it is. And secondly, when I look at you, I remember the phrase very common being said, Punjabiyan di battery charge rehti hai. And you are the true example of that. Every time we see day, night, 24/7, you have the same amount of energy and you're always there with all of us anytime. Kabhi khushi ka waqt hua, kabhi kami ka waqt hua, you are always there with us. And so we are blessed to have you in our life. May God bless you. तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में बना रहे, जितनी ज़िंदगी ऊपर वाला मुझे दे या तुझे दे, हमेशा साथ में दे. God bless you. We love you. Bari Saab, Sat Sri Akal. A very happy 50th birthday anniversary to you. You made it halfway. Half and more to go. और जैसे आप अभी तक रहे हो, बिल्कुल वैसे ही रहें आप, क्योंकि you are a very special person, a very amazing human being with a heart of gold. हमारी दोस्ती बहुत ही गहरी है, बहुत ही पुरानी है, बहुत ही अच्छी है. तो बहुत बार मैं सोचता हूँ कि जब जब हम मिलते थे क्रिसमस के टाइम वगैरह, तो कैसी चीज़ें खुद करता था, यहाँ जाना वहाँ जाना, एंड प्लस द लाइवलीनेस यू ब्रिंग टू द पार्टी. तो यू आर हार्ट ऑफ अ पार्टी, हंसना, मजाक करना, बच्चों को इन्वॉल्व करना, बच्चों से थोड़े से पोकिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस करना, तो वंडरफुल. तो आई चेरिश योर फ्रेंडशिप, ऑल्दो हमारे पिछले 1-2 साल से ज़्यादा बात नहीं हो पा रही, वट एवर, बट यू स्टिल माई बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, एंड आई होप यू फील द सेम वे. एंड अगेन एक और किस्सा मुझे याद है, जब मैं एक बार काउंट्री में या कहीं था, जब मेरे पैर हो गए, तो पैर में कुछ दर्द हुई थी, यू टुक मी टू द हॉस्पिटल. सो तो बहुत बढ़िया बंदा है. आई लाइक टॉकिंग टू यू, आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद यू, and hopefully we continue on this friendship journey forever. Thank you. Happy birthday, Bhai. We are so blessed to have you as our friend. You're such an amazing, fun-loving person. Wishing you lots and lots of happiness, success, and many, many more years of tennis, sir. Missing you. Bhai Saab, happy birthday. आज हमारी दोस्ती के बीच में फिजिक्स और मैथमेटिक्स आ गई अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आई हैव रिटन समथिंग फॉर यू, सो आई एम गोना रीड इट आउट. सो तुम्हारी दोस्ती में सुकून है, तुम्हारी दोस्ती में ठहराव है, तुम्हारी दोस्ती में ठहाके हैं और तुम्हारी दोस्ती में तसल्ली है, तुम्हारी दोस्ती में हंसी मजाक है, तुम्हारी दोस्ती में बिछड़ने का दुख है और मिलने की आस है. इस दोस्ती में तुम हो, इस दोस्ती में हम हैं. So have a fantastic 50th happy birthday. और बस यूं ही मुस्कुराते रहो, यूं ही चमकते रहो, और यूं ही हमारी छाती पे मूंग तलते रहो. Happy birthday, Bhai. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ
ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। विशाल, तू दोस्त नहीं रे पगले, तू दोस्त की एक मिसाल है। एवरी टाइम मैं तेरे बारे में सोचता हूँ मुझे एक इंसिडेंस याद आता है। अब वो मैं इंसिडेंस आज शेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका सारांश जरूर दे सकता हूँ। और उसका सारांश ये है कि हमारा भाई ऐसा है कि हर कतार में हमारा भाई सबसे आगे रहता है, कोई भी कतार हो। कभी पैसे देने हो किसी के लिए तो भाई सबसे आगे। वो अलग बात है कि पैसे हो ना हो, लेकिन भाई हमारा सबसे आगे। किसी की हेल्प करनी हो, किसी की पार्टी में ऐसा कुछ हंगामा करना हो कि साला साले की फट जाए सामने वाले की, तो भी विशाल है। तो भाई मेरे, यू आर अमेजिंग गाय। 50 साल में जो तूने अपना ये कैरेक्टर बनाया है शानदार वाला, भगवान करे यही तेरा चूतियापा फॉर अनदर 50 ईयर और मे बी मोर, ऐसे ही हम जैसे चूतियों दोस्तों के साथ में चलता रहे। विश यू वेरी वेरी हैप्पी 50th बर्थडे। हाय विशाल, विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे। देख मैं तेरा बर्थडे का वीडियो भी सेल्फी मोड में बना रही हूँ कितनी ऑनेस्टी के साथ। एंड तुझे पता ही है, यू आर वेरी स्पेशल फ्रेंड। एंड वन थिंग दैट रियली स्टैंड्स आउट अबाउट यू, जो मुझे हमेशा मतलब अट्रैक्ट किया, इज यू आर सो फुल ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑन कंपैशन। सबको इतने दिल से रिस्पेक्ट से ट्रीट करता है, स्पेशली औरतों को। हाँ, औरतों को डिवाइड। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और ना, दैट इज सो स्पेशल अबाउट यू। शेफाली स्टैंप लगाना जरा इस पे। ऑफ कोर्स लगाएगी। और दूसरी थिंग दैट स्टैंड अबाउट यू, लाइक तो इतने बड़े बड़े पैक बनाता है। मैं आजकल बंद कर दिया है। शुरू की बात बता रही हूँ। दैट्स वन थिंग दैट रियली स्टैंड आउट अबाउट हिम। है ना, यू आर वेरी स्पेशल फ्रेंड। हर पार्टी की जान, हर चीज इतने दिल से करता है। देयर इज नो नथिंग फेक अबाउट यू, दैट आई रियली लाइक। इसके बाल काले फेक है। शट अप। तो नथिंग फेक अबाउट यू। एंड हम पागल नहीं है, भैया का सबसे बड़ा गैंग लीडर। लव यू, हैप्पी 50th। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vishal. Happy birthday to you. Vishal, they say friendship isn't measured by years, but by the depth of it. And that's exactly true with our friendship. We've just known you maybe for a few years, like 4-5 years. But ऐसे लग रहा है we know you for last 50 साल से, जितना तुम्हारी उम्र है. So just because of you and because of the person you are. And अब हितिन बताएगा और Very happy 50th birthday to Golden Boy. You're always smiling, sensitive, humorous, loving, caring, smiling. जो भी है, तुझे रोज बोलता ही हूँ ना. You are a true and a rare gem. अब हितिन मेरी भाषा में बोले तो you're a rare gem, मतलब in the market. So Rare diamond. yes, yeah. भाई बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत खुशियाँ यूं ही बांटते रहना, खुश रहना, खुश बांटते रहना और टीटी खेलते रहना. विशाल, बस एक इंसिडेंट आई वुड लाइक टू से, यू नो, फनी मोमेंट्स तो बहुत हुए हमारे अपने लोगों के संग, बट वन मोमेंट felt both of us. Yeah, that really touched us both was, you know, when we were all supposed to go on a holiday together, and due to a family emergency, me and Hitin were almost about to cancel our holiday. And you, without a blink, या before हम explain भी कर सके, you just said, that's it. If you're not going, we are not going. You jump, I jump. And I think that is what really touched us. Like, you know, ऐसी दोस्ती कहीं नहीं मिलती है. बस ऐसे ही रहना हमेशा, और हमें हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहना. हम भी आपको ऐसे ही प्यार करते रहेंगे. We love you a lot, Vishal. Love you, bye. Love you, बल्ले बल्ले. Bye. तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना.
Happy 50th birthday, Dad. I wanted to start this video by saying thank you for everything you've done for me. I remember when you forced me to wake up at 6 to play squash. I complained at the time, but looking back, I'll forever be grateful for the time we spent together. I will forever cherish it. Since I've been young, you've always told me to remain disciplined and committed. Thank you for always challenging me to be the best version of myself. I love you, and I can't wait to make even more memories with you over the next 50 years. Happy birthday. कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। और तू दांत निकाल रहा है गंदू सा। जब तू बड़ा हो जाएगा ना, हाँ सुन मेरी बात, फोटो दिखाता हूँ, बट जब तू बड़ा हो जाएगा ना और तेरे कभी चोट लगी तब भी ऐसे ही हंसते रहना, ठीक है? और क्या, चोट ये देखना थोड़ी देर में कहाँ जाएगी। गुड गर्ल बन गया तू, वेरी गुड। अच्छा आइज ब्लिंक कर दे एक बार। वेरी गुड, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू बोल दे। हाय टीथ, आई लव यू बोल दे पहले। डेजी आई लव यू, पहले आई लव यू बोल। आई लव यू बोल दे यार। आई लव यू। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन।